Okay, so 10.12, as we read the statement, square lamina ABCD, diagonal is given, length आपको नहीं given है, आपको diagonal का dimension दिया हुआ, that is 200 mm, resting one of his corner A on VP, resting one of his corner A on VP, the diagonal BD is perpendicular. तो किसी एक कॉर्नर पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे वी नीड टू make our plane, and also it is front view appears as a rhombus. तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल प्लेन के पैरेलल होगा, और फ्रंट व्यू कैसा अपीयर्स कर रहा है आपको, रोम्बस के जैसे, जिसमें एक डायमेंशन आपका 150 mm होगा, तो वो कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो रेफरेंस लाइन के पैरेलल है, परपेंडिकुलर वाला सेम रहेगा. सो उसके बेसिस पे यू नीड टू मेक द प्रोजेक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू क्रिएट ए रोम्बस विच इज पैरेलल टू दी वर्टिकल प्लेन. तो आपको फ्रंट व्यू में क्या मिलेगा, सॉरी स्क्वायर प्लेट, कितना डायगोनल दिया हुआ आपको, 200 mm. 200 mm मीन्स 2 AutoCAD यूनिट, ठीक है. If you want we can take it above. Similarly from this, ये side 100 and this side also 100. तो ये आपका diagonal create हुआ. Now you have to join. Okay, so this is your square. और इसमें हमने ऐसा क्यों बनाया है इसको, बिकॉज ये एक पॉइंट पर रेस्ट कर रहा है, और उस पॉइंट से अगर हम ड्रॉ करें एक लाइन, जैसे सपोज ये लाइन सेंटर ऑफ द प्लेन, वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए. सो दिस वाई वी हैव ड्रॉन लाइक दिस. नाउ वी कैन डू द लेबलिंग, लाइक ये आपका ए डैश हो गया, ये आपका बी डैश, दिस वन इज योर बी डैश, दिस वन इज योर सी डैश, and one more we can take, this one is D dash. Also in the statement is given BD is perpendicular to the HP, so that's why it is following this. Okay, क्योंकि अगर हम ऐसा अगर प्लेन को रखते हैं सपोज स्क्वायर के फॉर्म में, तो उसका जो डायगोनल क्या होगा, ये अभी जैसा हमने इसको यहाँ रखा, तो ऐसा पहले तो HP के परपेंडिकुलर होगा, फिर ये डायगोनल आ रहा है, ठीक है. सो इज दिस वे. सो नाउ in other view what we get, line view. So यहाँ पे okay, so this is your line view. I can remove this line. इसको भी हम लेबल कर देते हैं. This one is A and this one is C, and B and D we will get in single point. ठीक है, यहीं पर आपका B आएगा और यहीं पे आपका D आएगा. ये पॉइंट को लोकेट कर देते हैं, जो कि सेंटर ऑफ द लाइन ही होगा, बट एनीवे वी कैन लोकेट थ्रू प्रोजेक्शन. ठीक है. Now in the next step what is saying that कि front view appears as a rhombus, so one of the dimension is 150 mm. Now the diagonal dimension in the true case is basically 200 mm. So this 200 mm perpendicular one remains same. Only the A dash C dash will going to change. That will be up to 150 mm. So we can transfer this in the next step. So this will remain same. Okay. Now only this dimension going to change, that is 150 mm. 150 mm as per the statement. So this length A dash C dash going to change, 150 mm means 0.75 this side, similarly 0.75 this side. Okay, now we can join this. Fine, now we can give the labeling.
So this now become square to rhombus. Here A dash, this one is your C dash, this one is how much? Is D dash, and this one is B dash. Now somewhat मतलब आपने कुछ inclined किया होगा this line, the previous line, the two line, that's why you get the rhombus in the next view, मतलब उसका apparent shape आया. So इसको कैसे incline करना, how much you need to incline? So for that we need to draw a projected line from C dash, okay, because A is on resting condition में, so you should start from the reference line, okay. So how much the dimension of this line is 200 mm, means 2 AutoCAD units. So another line we can draw from A dash, okay. Now from this point we are going to cut a arc of 200 mm. So arc center, how much? Okay, center point we can define as this point, and how much? 200 means 2 AutoCAD unit. Fine. Now we are going to join this line int, and this is also int. So this is 200 mm line we join, and this we can change the color to cyan to bilayer. Can measure the dimension as well as I think we need to turn off the snap. So this one is 41 degree. Okay. So this is the way you need to solve this problem. Easy.